and welcome to Immigration and Settlement Show, Voice of Toronto, with the courtesy of HMB, Canadian Immigration Law Firm. नाजरीन, आज हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर हिलिया बेगन हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपके साथ चंद बातें करेंगी, फिर हम कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में इनसे चंद सवालात पूछेंगे और हम इससे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ जनाब डॉक्टर हिलिया, हाउ आर यू? Thank you, Shah. Hello, everyone. So, could you please tell a little about your firm and what kind of activities that you're involved in? First, let me just recall about the last show. It was about entrepreneur program. We talked last program. Our services, it's about immigration, permanent residency, and temporary residence. Do you have any question or you want me to explain it more? So basically, नाज़रीन ये बतानी है कि इनके पास यहाँ पर कनाडा का इमिग्रेशन सर्विसेज हैं, जिसमें ये स्टार्टअप प्रोग्राम जो यहाँ पर अपनी तिजारत करना चाहते हैं उनको पूरी इमिग्रेशन सपोर्ट देते हैं। ये यहाँ पर वर्क परमिट का भी काम करके देते हैं, रेफ्यूजीज़ का भी काम करके देते हैं। हर तरह का इमिग्रेशन सर्विसेज अब इनके पास अवेलेबल है। ये HMB कैनेडियन लॉ इमिग्रेशन लॉ फर्म, इनका फ़ोन नंबर है 416-838-911। हम लोग राइट नाउ लाइव हैं और अगर हमारे नाजरीन को किसी ने कोई सवाल करने के लिए फ़ोन करना है तो हम लाइव कॉल्स ले रहे हैं राइट नाउ 905-670-4114 पे। तो आज का हम लोग मखसूस सब्जेक्ट पे आते हैं। हम लोगों ने डॉक्टर बेगन से कुछ सवालात पूछने हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, फिर वो जो जवाब देंगी फिर मैं आप लोगों को उसका क्लैरिफिकेशन करके दूंगा। सो डॉक्टर हिलिया, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट like express entry and PNP program. Yes. So please, can you just tell us a little about the criterias that are needed for these programs? What countries are the most eligible for this program, and who are the people that can apply for these programs? Let me just explain it that they are the same program we used to call skilled worker program. But right now, there are two different programs. One is federal skilled worker, and first they call it express entries. And express entries have three different categories. So one is federal skilled worker, one Canadian experience class, and the last one is a trade program. And we have another one is PNP that Joe just mentioned, that provincial nominee program. Those are the same program, but the criteria are different. Okay. So नाजरीन, इन्होंने ये कह रही हैं कि एक्सप्रेस एंट्री और PNP दो प्रोग्राम्स हैं। जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है वो फेडरल लेवल का प्रोग्राम है। फेडरल लेवल यानी द फेडरल गवर्नमेंट ऑल ओवर कनाडा, और जो PNP प्रोग्राम है वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है जो प्रोविंसेस के ऊपर बेस करता है और उनकी क्राइटेरिया पे है। तो उनके क्राइटेरिया मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं। सो आए उनसे पूछते हैं कि वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो रिक्वायर करते हैं कि क्या क्या उसमें इनका काबिलियत और क्वालिफिकेशंस हो ताकि इमिग्रेशन आसान की जा सके कनाडा के लिए। सो डॉक्टर हिलिया, द क्वेश्चन इज राइट नाउ दैट व्हाट क्राइटेरिया would be a good candidate for the express entry program? For the express entries? Yes. Okay. Specifically, we're talking about as I mentioned, entry. Yes, as I mentioned, three different categories express entry has. So first, we're talking about the federal skilled worker. Those are first the age. The age of applicant. What age would that be? We're talking about 24 up to 30, 38 max. And education is really important, very, very important.
at least they can have at least 2 years of college, equivalence to Canadian diploma in college. But if whoever apply for it, they have to go to the pool. So right now it's 450, 415 is or 460 is the highest point, or sorry, it's not the highest point. It's like a minimum point that they can apply and enter to the pool. So the education is very important. Year of job experience. The job experience, it's very important, has to be related to their education, the age, and most important thing is English ability test. The CLB minimum they're asking for 6. नाजरीन, so डॉक्टर साहिबा का कहना है कि अगर कोई एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए चंद चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। नंबर 1 कि एक एटलीस्ट 2 साल का डिप्लोमा जो कनेडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ मैच करता हो वो, या बैचलर्स हो, उनकी एज जो है वो 24 से 38 के बीच में हो, और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम्स में उन्होंने एक अच्छी मार्क्स हासिल किए हुए हों। जब ये चंद चीज़ें हैं जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो पॉइंट्स की है वो 460 है। ये मिनिमम आपने स्कोर करना है ताकि आप इस सिस्टम के लिए एलिजिबल हो जाएं। फिर उसके बाद जितना इसके साथ और भी चंद फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे आपके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। आइए हम डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि वो चंद फैक्टर्स क्या हैं जो अगर और हो उससे कैंडिडेट्स कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। Dr. Begum, so right now you just said that you, like for anybody, any candidate who wants to apply for the express entry program, Yes. like you told me, like there are certain criteria that somebody has to match, Yes. which is education, which is their age, which is their work experience. The minimum points he needs to score is 460, correct? Yes. Okay. Now, what other factors could be somebody have that they can score more points? What would that be? The another one is that they can have the highest score, and if they don't have enough score, they can have a job offer, Canadian job offer, that will give them 200 points again. So basically those are 200 more points. Yes. Okay. So नाज़रीन, so डॉक्टर बेगम का कहना है कि अगर आपके पास यहाँ की कैनेडियन कोई जॉब ऑफर हो तो वो आपको 200 पॉइंट्स का बूस्ट दे सकता है। सो ये चीज़ एक बड़ी काबिल ज़िक्र बात है कि इस चीज़ में आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट 460 है जो आपकी एजुकेशन और आपकी एज से मैच कर सकती है। उसके बाद अगर आपके पास कोई कैनेडियन जॉब लेटर है तो उसके थ्रू आप यहाँ पर अपने पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कनाडा में PR हासिल करके यहाँ की शहरियत हासिल करना, यहाँ पर रहना और यहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी बसर करना। सो अब हम चलते हैं दूसरे सेगमेंट पे जो है PNP प्रोग्राम। डॉक्टर बेगन, now could you please explain the criteria, the basic criteria for the provincial nominee program? A provincial nominee program, they just calculated from 100 points, but if someone has up to 60 points, they can apply for it. So again, the CLB they needed, like the English ability test, IELTS, they needed, but it's totally different from the federal skilled worker. Instead of the minimum CLB 6, they can have the minimum CLB of 5. The education for federal, we're talking about at least 3 years of experience after. This is really important. Whatever job experience
anyone has, it has to be full-time after the education. But for some provincials, the job offer, the job experience is not required. At least 6 months or 1 month would be enough after that. And also there is a system that we can, if during their study they had a job experience, we can calculate that part-time job to full-time job as well. And also for the education, even with the diploma, high school, not the high school diploma, the college diploma, they can apply for it. So minimum it's 6 out of 100 points. Oh my God! First of all, you're a sea of knowledge. I have to say that. Thank you. नाज़रीन, अभी जो हमारी गुफ्तगू हुई है ये हम आपको बताते हैं, हम आपसे शेयर करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. प्लीज हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं. थैंक यू. Toronto for a mystical Sufi experience. Scope 360, in association with Music Waves International, proudly present Sai Zahoor and Jaber Abbas live in concert on May 14th, 2023 at Capitol Banquet Hall, 6435 Dixie Road, Mississauga, Ontario. Tickets are available on eventbrite.ca. To get a 30% discount, enter the promo code SUFI23. Doors open at 6:30. Concert starts at 7:30 p.m. sharp. For tickets and sponsorship details, please call Umayma. मैं हूं तारिक खान, आपका फैमिली रियल्टर इन GTA। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, तो मुझे कॉल करें। Sell or buy? Call this guy 647-787-7400. Hi, my name is Sandeep Singh. I'm the owner of Heritage India Restaurant. It's a fine dining restaurant with tradition and culture. अगर आप पुरानी दिल्ली की ट्रेडिशन, कल्चर और माहौल को एंजॉय करना चाहते हैं खानों के साथ, तो प्लीज़ आएँ हेरिटेज इंडिया 485 मेन स्ट्रीट, ब्रैम्पटन। मैं चाहता हूं कि आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यहां आएँ, आकर के हमारे खाने का लुत्फ़ उठाएं। और अगर आपके यहाँ किसी तरीके की कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बेबी शॉवर, तो हमारे यहाँ डिफरेंट हॉल्स भी हैं जिनका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Hello, this is Tahir Mangat from Remax Millennium. I'm top producer and award winner realtor for multiple years. हम आपको प्रोवाइड करते हैं under one roof real estate services, mortgage services and legal services for all the real estate matters. मेरा contact number है 647-778-7879 and I'm searchable on all the social medias with Tahir Mangat name.
and I sell it for max, and I'm the best negotiator. Welcome back, Nazreen. So now we are back on the show. So ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डॉक्टर बेगन से हमारी बातचीत चल रही थी, जिसमें डॉक्टर बेगन ने हमें कुछ बहुत ही अहम बातों से आगाह किया। वो बातें कुछ इस तरह की हैं कि प्रोवेंशनल प्रोग्राम में आपके पास डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, उसमें पॉइंट्स मिनिमम 60 चाहिए होते हैं। सर, यहाँ पर हमारी एक कॉल आ गई है और हम यहाँ से अपनी कॉल आंसर करेंगे और फिर आगे देखते हैं कि ये इनके क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Hello, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। How are you? Fine, very well. What about yourself? Not too bad, thank you. I just had a quick question that you were asking your audience. Sure. The question I had was, how often express entry program is announced? Sorry, come again. I need to understand your question. My question was, how often express entry program is announced? Is announced. Okay. Correct. Okay, sure. Thank you so much, and we'll be responding. You please stay tuned on the channel with us. Thank you so much. You're welcome, Bye-bye. buddy. Dr. Bacon, please, yes. if you can respond to that. I was going to explain that every 2 weeks on Wednesdays, they will do that. They will announce it. So, basically, Dr. Began ये बता रही हैं कि हर 2 हफ्ते के बाद बुध वाले दिन वेंसडे को अनाउंसमेंट होता है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम का। सो whoever is interested, जिसको भी जो भी इसमें यानी इंटरेस्ट रखते हैं, वो अपना हर 2 हफ्ते में चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट से कि ये कब इनका पूल ओपन हो रहा है। ओके, सो हमारी जो बात हो रही थी वो तो बीच में अधूरी रह गई। हमारे बहुत अजीज कॉलर ने हमें कॉल की एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर बेगन ने हमें ये बताया कि जो फेडरल प्रोग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट और उसका बार काफ़ी हाई है, ठीक है। सो जो PNP प्रोग्राम है, जो प्रोविंशियल लेवल का प्रोग्राम है, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स कम है, उसमें पॉइंट्स भी आपको कम चाहिए, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम्स में आपको कम बैंड चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स ज़रा सॉफ्ट होती है। बट जो एजुकेशन की भी इतनी उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो डेफिनेटली होती है, बट not to the bar of the express entry. So उसमें आपको जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है जॉब ऑफर की। सो जब जॉब ऑफर आपके पास हो, रेस्ट ऑफ द आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम्स के सर्टिफिकेशंस हो, दोज आर प्रीटी मच द थिंग्स। और एज का मैंने पूछना भूल गया, मैं ज़रा इनसे डॉक्टर बेगन, सॉरी, when I asked you the question, I forgot to ask you that for the PNP program, is there any age restriction? For some provinces, yes, but for Saskatchewan right now, the maximum age is 50. अच्छा, तो डॉक्टर बेगन हमें ये बता रही हैं कि जो बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है कि एज के हिसाब से हर प्रोविंस का डिफरेंट रूल है, पर लेकिन जो सबसे ज़्यादा एज एक्सेप्ट कर रहे हैं वो प्रोविंस ऑफ सस्केचुआन है, और वो अप टिल द एज ऑफ 50 आपको PNP प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सो डॉक्टर बेगन, फॉर एग्जाम्पल, if I'm asking this question on behalf of our viewers, that if one of which countries would be the best candidate for express entry program or for PNP program, if you can please explain that. We cannot distinguish. You want to answer the phone? It's okay. No problem. I think people really want to ask you a lot of questions. Okay, no problem. The sea of knowledge of immigration is here, ladies and gentlemen. Okay. Hello and welcome to Immigration and Resettlement Show. Walaikum salam. जी, हम आपका शो देख रहे हैं। मैं
आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे कजन है जो दुबई में है, तो ये जो प्रोग्राम है आपका एक्सप्रेस एंट्री जो है प्रोग्राम, इसमें आप ये बताइए कि एज रिक्वायरमेंट क्या है और अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक और है, क्वालिफाई कैसे होगा? चलो ठीक है, आपको उसमें आपको आपने 3 सवाल पूछे कि एज की क्या रिक्वायरमेंट है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं जी, और तीसरा और एज का, एज अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके जी। चलो जी ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सॉरी, क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, वही यानी अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, वो हम दोनों बात करते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपका जवाब लेके देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। You're welcome. Dr. Begum. Yes. Our esteemed viewer has just posed a question for you. Yes. That she has a relative residing in Dubai. Yes. And they want to invite them over to Canada on Express Entry program. Okay. So they have a few questions with you. Pretty much you've answered, but they require a special answer for them. Okay. So they want to know that what is the age for Express Entry program into Canada, the federal program? Yes. How to qualify and how to apply. These 3 questions, please. Okay. Let me answer. How they qualified, as I mentioned, but let me just go back to the first question. She was asking the age. So obviously for federal skilled worker, the age is very important. So less than 40 would be the highest point they can get. So based on their qualification, they can apply. First, NOC number, national occupation number is very important. If the NOC number is between A, B, and 0, so obviously they will get the highest score for that. And everything, all the CRS score and the points is based on their qualification. What is the next question, Dave? How to apply? How they apply? Once they have to go to open their profile, and then if they are qualified, then they can enter the pool. Okay. Express pool. So, just put a little light on the age. It's between what and 40? Obviously, it has to be after their education. After they graduate. So basically, yes, around education. 22 to 23 until 40. 40 is the maximum age. Okay. But if they want to have a high score, high CRS score, and the point that they can enter to the pool, so it's the best thing that they don't go with the maximum qualification and the maximum CRS point. So it's better between 22 up to 30, 35, they will get the maximum point for the age. All right. Thank you so much, Dr. You're welcome. So, हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी कॉल की थी, मैं आपको उसके लिए आपकी क्वेश्चन से क्लैरिफिकेशन बता दूं कि फ्रॉम द टाइम आप अपना जो एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, दैट्स ऑब्वियसली द एज ऑफ अराउंड 23-24, फिर वहाँ से लेके आपके पास अराउंड 35 की एज तक की जो बेस्ट टाइमिंग होती है कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यू स्कोर फुल पॉइंट्स। नाउ अब अगर आप बात करेंगे क्वालिफाई क्या करना है, तो बेसिकली एवरी इंडिविजुअल की एजुकेशन, उसकी वर्क उनका वर्क एक्सपीरियंस, उनके डॉक्यूमेंट्स देख के ही इस चीज़ को कंफर्म किया जा सकता है कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। और इसको अप्लाई कहाँ करना है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से एक चीज छोटी सी ऐड करूंगा कि प्लीज HMB कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ फर्म से रब्ता करें। 416-836-9911 1-888-855-5462। Dr. Helia Begum, the founder of HMB कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ फर्म, आपके अब कनाडा मूव होने के, इमिग्रेट होने के हर
तरह के सपोर्ट प्रोग्राम्स, इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हमारे पास हर वक्त अवेलेबल रहते हैं. Anyways, so basically, let me just tell you that I just No said problem. that if you want to where to apply, I said just contact HMB Canadian Immigration Law Firm. We'll do it for you. It's immigration firm. Yeah. Exactly. Yes. So moving forward from this, which countries and nationalities would you say would be the choice of immigrants to Canada who you think will get the visas quickly and like they get the less processing times? I can say that this is not a good question you asked. Because Canada, it's the land of opportunity, and and Canada is welcoming every single foreign skilled worker. So we cannot mention that which country they are the toppest and who's the best candidate. Whoever has an education and qualified based on their knock number, job experience, the age, they are willing to apply for federal skilled worker, express entries, also provincial nominee program. Okay. So नाज़रीन, जैसे कि आपने अभी डॉक्टर बेगन से सुना कि कनाडा में कोई प्रेफरेंस नहीं है, आप जिस मुल्क से भी हों, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, उसके बेस पे आपको यहाँ पर इमिग्रेशन के मौके फराहम होते हैं. सो ये इररेलेवेंट है कि आप दुनिया के किस कोने में रहते हैं, आपकी क्या नेशनैलिटी है. अगर आप कनाडा इमिग्रेट करना चाहते हैं, सो इसमें आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी जो पॉइंट स्कोरिंग है मैटर वो करती है. आपकी नेशनैलिटी, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता. सो लेट्स मूविंग ऑन टू द फर्दर क्वेश्चन. सो व्हाट kind of jobs, like we're talking about PNP right now because yes. It has to be first it has to have a job offer so that PNP can be processed. Is that correct? Most of the provinces, yes. Okay. But some of them, it depends on the CRS score the applicant have, like applicant has. So it's not necessary to have a job offer first, but the important point is the expression of interest. Why they applying that province? Why they want to stay on that province? And if they can find a job offer over there, so obviously it's much easier, and with the CRS score point system, they will get high score. Okay. नाजरीन, सो ऐसे जैसे कि डॉक्टर बेगन हमें बता रही थी अभी कि यहाँ पर जो PNP प्रोग्राम है उसके लिए कोई भी इमिग्रेट अगर कर रहे हैं कनाडा के लिए, सो उसमें बेसिकली जॉब ऑफर होना ज़रूरी नहीं है. बहुत से प्रोविंसेस हैं जहाँ पर ज़रूरी भी है, बट डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चूज़ करते हैं. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा रिक्वायर करती है इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन, कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप उसी प्रोविंस में क्यों मूव होना चाहते हैं, वहाँ पर ऐसा क्या है, आपकी ऐसी क्या काबिलियत है, ऐसे क्या ये मामलात है जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव होना चाहते हैं. सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कोई कनाडा के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन में आपको ये बताना वाज़े करना होगा कि आपका इरादा जो है कनाडा मूव होने का वो उस जगह पे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यों है. वो इफ दैट मेक सेंस, अगर वो सेंस बनाएगा तो डेफिनेटली आपका प्रोसेस जल्दी इसमें हो जाएगा. Now, I just want to add something. Sure, for applicants who are applying through different provinces, it takes right now it says the time limit is 12 months, but if they have a job offer
and if they can get a Zoom interview with the employer, and the employer accept them, there is a chance that they can move in and come to Canada before they get their permanent residency. They can come to the province and start their job. They will get pay, and then during the job, like work permit, they will get their permanent residency as well. ओके सो नाजरीन, डॉक्टर बेगन ने अभी हमें बताया है कि अगर फॉर एग्जांपल कि आप किसी जगह के लिए किसी प्रोविंस के में इंटरेस्टेड हैं, आप वहाँ पर कोई जॉब हासिल करने में कामयाब होते हैं जूम मीटिंग के थ्रू या किसी भी टीम्स मीटिंग के थ्रू, एनी पोडियम में इट बी, उससे आप लोगों को ये चीज़ का फ़ायदा हो सकता है कि वो आपको वर्क परमिट इशू करवा सकते हैं और वो आपको आप कनाडा मूव ओवर हो सकते हैं, आप यहाँ पर उसको जॉब ज्वाइन करें और आप अपना काम करें, एंड मीनवाइल आपका पीआर भी साथ साथ प्रोसेस हो जाएगा. सो वंस दैट्स रेडी यू विल हैव पीआर. सो इफ़ यू कैन सिक्योर अ जॉब विद इन कैनेडा, आपकी स्किल्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और आप वो चीज़ उन्हें ऑफर कर सकते हैं, उस बेस पे आपको कनाडा मूव होना ज़्यादा ईजी हो जाता है. So that's about that. Just we're talking about the provincial nominee. Yeah, program, so I actually federal said one. I actually said that it's for provincial. Yes. Now it's not for federal. Federal is a completely different thing altogether. Yes, that's right. No, like our viewers have a complete understanding of that. I'm pretty sure. So, Dr. Began, what kinds of jobs, because I'm sure that our viewers want to know that what kind of jobs there are the most which is required in Canada, so those specific skilled people would be like applying for these jobs. I can say that any jobs, especially after the pandemic, Canada facing shortage, like a worker, and they have hiring different people with different skills. But whoever has a knock number of A, B, and 0, they are most qualified applicant. Mainly we can mention nurses, like medical field, also engineers, construction worker. I can remember all of them, but right. Those fields are. No, once again, I will say, sea of knowledge. I have to say that. Anyways, Nazreen, so basically, Dr. Began ने हमें यहाँ पर बताया है कि मेडिकल इंडस्ट्री है, आपके पास हर तरह की जॉब यहाँ पर अवेलेबल है, आपके पास काबिलियत है, आप अप्लाई करें, अगर आपको जॉब मिलती है तो उससे आप आगे कनाडा के इमिग्रेशन एंड रीसेटलमेंट में आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं. तो नाजरीन, यहाँ पर आज के लिए हमारा शो हमारे इख्तिताम पे पहुँचा है और उम्मीद करता हूँ आप सबको काफ़ी हमारा नॉलेज मिली होगी हमारी इस कन्वर्सेशन से. हमारा एवरी ट्यूसडे को ये प्रोग्राम लाइव होता है. प्लीज़ हमसे जुड़े रहिएगा इमिग्रेशन एंड रिसेटल शो में, एंड प्लीज़ हमें हमारे सोशल मीडिया पे HMB_Canadian_immigration पे ज़रूर विजिट कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा. प्लीज़ कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप हमें भी बताइएगा. डॉक्टर बेगम, would you want to say anything to the viewers before we close the show? Just mention that HMB firm has 18 different locations all over the world, especially in Middle East and also Pakistan. If I don't remember, just remind me. Dubai. Pretty much all over Europe and all not Europe. Europe, just Spain. We have a location over there. But Iran, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Nepal. Yes. Dubai, India. Yes. Of course, and the list goes on and on. With the 21 years of experience, as well,
next show, you forgot to mention that. The next show, we will talk about work permit. Perfect. Open work permit and closed work permit. ओके सो नाजरीन लीजिए इसके साथ हमारा ये आज का एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम फिर हाजिर होंगे हमारा शो लेकर आपके पास, जिसमें हम लोग ओपन वर्क परमिट एंड क्लोज वर्क परमिट पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए हमारी तरफ से इमिग्रेशन एंड रिसेटलमेंट शो से फ्रॉम वॉइस ऑफ टोरंटो, खुदा हाफिज़।